Good morning, students. Welcome to computer class. Today we will learn about software and its types. It is the second chapter of your book. Let's start. What is software? Students, we have already done in class 4th that what is software and what is hardware. But today I will explain you about software in details. सॉफ्टवेयर क्या होता है? व्हाट इज सॉफ्टवेयर? We all react differently according to the various situations. Have you ever thought that how it became possible? ये कैसे possible हुआ? जैसे हमारे पास कोई situation आती है तो हम अलग से react करते हैं. Let's understand with this example. What happened when your teacher asks you a question in a class? जब teacher class में question पूछता है क्या होता है? You simply raise your hand इफ यू नो द आंसर. तुम क्या करते हो? हाथ खड़ा करते हो, तुम्हें आंसर पता होता है. बट हु प्रॉम्प्ट्स यू टू रेज द हैंड? कौन बोलता है कि हाथ खड़ा करो, तुम्हें आंसर आता है, रेज योर हैंड? इट इज द ब्रेन दैट गिव्स यू द इंस्ट्रक्शन टू रिएक्ट लाइक दिस. अ ह्यूमन ब्रेन, वो आपको इंस्ट्रक्ट करता है कि यू नो द आंसर एंड रेज योर हैंड एंड गिव द आंसर टू टीचर. सिमिलरली अ कंप्यूटर गेट्स ऑल द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर कहाँ से इंस्ट्रक्शन लेता है? सॉफ्टवेयर से. टू परफॉर्म वेरियस टास्क, हर तरह का टास्क करने के लिए. सॉफ्टवेयर इज अ सोल ऑफ कंप्यूटर विदाउट विच इट कैन नॉट एग्जिस्ट. सॉफ्टवेयर कैसा है? कंप्यूटर की आत्मा जैसा. बिना आत्मा के कंप्यूटर का कुछ नहीं हो सकता. सो सॉफ्टवेयर इज लाइक अ सोल ऑफ कंप्यूटर. विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर विल नॉट स्टार्ट. लेट्स स्टार्ट. लेट्स सी व्हाट इज दिस. A computer, it's a machine. It can do different type of work, but it needs order. It needs your order. Once you will give order, it works. A computer without instruction is like a car without driver. A computer में instructions नहीं देंगे, orders नहीं देंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कार में ड्राइवर ही नहीं है, बिना कार का ड्राइवर का कार है. It requires a set of instruction given by us to work on. कंप्यूटर को क्या चाहिए? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन चाहिए ताकि वो काम कर सके. दीज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड प्रोग्राम्स. ये जो सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो हम इनको अलग अलग तरह के इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को चलने के लिए, इन्हें क्या कहते हैं? प्रोग्राम. दीज प्रोग्राम्स आर रिटन इन कंप्यूटर लैंग्वेज. ये लिखे जाते हैं किस में? कंप्यूटर लैंग्वेज में. Software is a collection of programs that store and run on the computer hardware and help user to work on computer. तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? What is software? Software is a collection of program जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर पे हम डाल देते हैं जिससे कि कंप्यूटर चलता है, स्टार्ट होता है, काम करता है. सॉफ्टवेयर इज दैट पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच कैन नॉट बी सीन और टच. ऐसा पार्ट होता है कंप्यूटर का जिसे ना तो हम देख सकते हैं ना हम छू सकते हैं. कितनी तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं? देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन. नाउ स्टार्ट विद द सिस्टम सॉफ्टवेयर. व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? System software is defined as a collection of programs that control overall operation and internal working of computer system. Overall सारा ऑपरेशन करता है और कंप्यूटर को इंटरनली हेल्प करता है काम करने के लिए. जैसे लेट्स सी द एग्जांपल. इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल. इनपुट, फ्रॉम इनपुट डिवाइस वी रीड द डेटा, इट गोज टू द सीपीयू फॉर प्रोसेसिंग एंड देन वी विल गेट आउटपुट ऑन द स्क्रीन. टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. फर्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड इज application software. System software are inbuilt software which we cannot change, we cannot see and touch. Let's start with the system software. How many types of system software are there? First is operating system and second is utility program. Operating system क्या होता है? What is operating system? ऑपरेटिंग सिस्टम इज नीड टू ऑपरेट अ कंप्यूटर. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? कंप्यूटर को ऑपरेट करने के काम आता है. ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. इट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर. सी, यूज़र कौन है? आप लोग हैं यूज़र. और हार्डवेयर जो कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं. अभी कैसे चलेंगे? आप कमांड देंगे और हार्डवेयर कैसे वर्क करेगा?
with the help of operating system, which is system software. Let's take an example. An operating system is look like a principal of your school. जैसे स्कूल में principals होते हैं. Yes, a principal has various responsibilities to manage the school, like बच्चों को supervise करना, teachers को supervise करना, workers को supervise करना, discipline maintain करना, एग्जाम शेड्यूल सेट करना, टाइम टेबल बनाना, करिकुलम बनाना, attending parents, visitors, etc. This is the work of principal. So the main responsibility of principal is to manage the school. In the same way, operating system performs various functions to manage the computer. Operating system अलग अलग तरह के functions को perform करता है जिससे कि कंप्यूटर को चलाया जा सके, उसे मैनेज किया जा सके. इमेजिन व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो प्रिंसिपल इन द स्कूल. अगर स्कूल में प्रिंसिपल ही नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी mismanaged. Similarly, if the operating system of a computer is not working properly, or if there is no operating system in the computer will not start. We cannot work on computer. So the main use of operating system, first thing, remember that operating system is the soul of computer. It is a part of system software. अब system software क्या है? Which we cannot touch and see, and in which we cannot make any changes. In system software we cannot make any changes. When we purchase a computer, at the time of manufacturing जो उसके अंदर instructions डाल दी जाती हैं, that is called system software. वो क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर. जो इंस्ट्रक्शंस एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वी यूज टू इंसर्ट इनसाइड द कंप्यूटर टू स्टार्ट अ कंप्यूटर. कंप्यूटर का स्विच ऑन करने पर जब कंप्यूटर स्टार्ट करता है, उस टाइम में कौन उसका हेल्प करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर. नाउ लेट्स स्टार्ट विद ऑपरेटिंग सिस्टम. Let's see why we need operating system to run software. We need operating system to run software like MS Word, Paint, Excel, MS-DOS. Microsoft Disk Operating System. MS-DOS stands for Microsoft Disk Operating System. Windows XP, Windows 7, Unix, Linux, Mac operating system. These are the examples of most popular operating system. But we are nowadays in India we are using what? Windows use करते हैं ना हम लोग. So we are using, and who developed Windows? Windows is developed by the company Microsoft. So the operating system help us to run these are the operating system. These help us to run computer in. Now let's see the functions of operating system. What are the main functions of operating system? First is device management. Input and output. It helps the input and output device to work in a proper manner. Operating system controls the working of all input and output devices. It manages input and output devices, and it makes the connectivity between input and output devices. Once I insert anything from input device like keyboard, it will process in the CPU and display the result on output device, which is monitor or printer. Memory management. Operating system helps to assign memories to various programs whenever required. It also frees the memory when it is not in use. ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है? ये मेमोरी असाइन करता है कि जब प्रोग्राम बन जाता है उसको किस जगह पे स्टोर करना है, उसको कितनी मेमोरी लगेगी, कितना स्पेस लगेगा, और अगर नहीं यूज़ कर रहे तो वो उसका स्पेस फ्री भी करता है. थर्ड इज रन सॉफ्टवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन सिस्टम सॉफ्टवेयर बट इट हेल्प्स इन रन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हमारे अपने यूज़ के लिए होते हैं? दीज आर लाइक पेंट, MS Word, MS PowerPoint. These are called application software, but who helps? Operating system helps them to run on the computer. Processor management. Processor means what? Your CPU. The operating system helps your CPU to work in a proper manner. It helps the CPU, the processor, by allocating various jobs to it, different jobs to it, what to do at what time. Second last is file management.
Operating system keeps the track of information regarding creation, deletion, transfer, copy, and storage of any file. Once we create the file, it will keep the track when it is created, if we do not need, when it was deleted, if we want to transfer it to another disk or from computer to pen drive, how it will be done, where it will be stored. So this is all done by operating system. Last but very important, security. It also provides security by means of password to prevent the misuse of a computer, that no one else can open your computer without the password. So it helps you with the password security system. Utility programs. What are the utility programs? It is also a part of system software. There are two parts we have already done. First is operating system, and second is utility programs. These utility programs perform specific tasks related to managing a computer and its device. जो कंप्यूटर और उसके डिवाइस हैं उसके कुछ जो टास्क होते हैं उनको करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, यूटिलिटी प्रोग्राम. दीज प्रोग्राम असिस्ट इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर. It helps the computer to work in smooth manner and perform in better manner. Some utility programs help you to avoid what? वायरस के अटैक से बचाते हैं, बैकअप लेने के काम आते हैं, टू रिकवर डेटा, अगर एक्सीडेंटली इरेज हो जाता है तो कुछ यूटिलिटी प्रोग्राम्स हेल्प करते हैं आपको वायरस अटैक से, डेटा के बैकअप से, और अगर गलती से डिलीट हो जाए उसको रिकवर करने के लिए. दीज इंक्लूड व्हाट? These utility programs include, first is antivirus. Look at the picture, there are few antivirus given. Antivirus, backup, disk repair, file management security, and network program to connect with the internet. Utility programs also help us. Now what, from where we will get? Sometimes it comes in between, inbuilt. But at the time of manufacturing it was like inbuilt to the programs, but sometimes you have to purchase, and sometimes you can download it from internet free of cost also. So look at the utility programs given here. These are the few examples of antivirus. You can download it from the internet free of cost as well. Let's start with the first one, antivirus utility. They provide protection to your computer against virus attacks. Look at the picture. These men are protecting your computer. No, actually, it's just an example. So, the antivirus help you to protect your computer from virus attacks. It also includes the tools to recover lost files and help the machine from system failure. Second is backup. What is backup? Backup is the process of recovering data in the case of damage or accidental loss. या तो गलती से delete हो गया, या सिस्टम हैंग होने की वजह से, या सिस्टम क्रश होने की वजह से वो चला गया. तो हार्ड डिस्क जो होता है जिसपे the main thing is the hard disk in which we used to keep our files. But by mistake, if we lose the data, we can recover it with the help of backup. From backup we will keep the data in another storage devices. The intelligent user can keep the files from backup from storage devices in the original time. From hard disk to where? You can store it in CD, you can store it in flash drive. What is flash drive? Flash drive is pen drive. Look at the picture. CD, compact disc, flash drive means pen drive. So you can store your data, you can keep the backup in CD and pen drive. Before, let's see the last one, compression. It is a process that shrinks the file so that less space disk space is occupied. ये एक ऐसा प्रोसेस है जो फाइल्स को, जो बिग फाइल्स है उसको श्रिंक कर देता है ताकि जो डिस्क है हमारी उस पर कम स्पेस ले सके. दीज फाइल कैन नॉट बी रीड डायरेक्टली. इनकी जो फाइल्स कंप्रेस्ड होती है इनको डायरेक्टली रीड नहीं कर सकते. यू मस्ट डीकम्प्रेस्ड टू देयर एक्चुअल फॉर्म बिफोर यूज. आपको इसको डीकम्प्रेस करना पड़ेगा एक्चुअल फॉर्म में. कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि few examples are WinZip, PKZip and 7-zip. So these are the example of compression utility programs. Thank you.